हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि भारत में और चाइना में क्या वार होगी, जबकि डेप्सैंग में और पैंगोंग में दो स्ट्रेटजिक हाइट्स हैं जो ईस्टर्न लद्दाख में हैं। उसमें चाइना की फौजें अभी तक वहाँ रुकी हुई हैं और बहुत कोशिश के बावजूद डिप्लोमेटिकली as well as military at general levels, the matter has not been settled. And so far, they have not vacated these two strategic positions in Ladakh. So now the question comes, is it going to create a war between these two giant countries? सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो जंग है या वार है, इसके मीनिंग वो नहीं रहे जो कि पहले होते थे। अगर हम आज ये कहें कि ये वार 1971 की होगी या 1965 की होगी या वर्ल्ड वॉर की तरह होगी, ये आज की स्थिति में 2020 में वार का जो कंसेप्ट है और उसकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है। इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि ये जो एस्पेक्ट है ये ऐसा नहीं कि आज से ही शुरू हुई है, बल्कि ये काफ़ी देर पहले, इवन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दिस सिचुएशन हैज़ कम इन ए डिफरेंट फॉर्म। वो क्या थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर दो पावरफुल कंट्री थी और उनमें एक कोल्ड वॉर चल रही थी। तो बहुत सी स्ट्रेटजिकली उनका अप्रोच जो दूसरी कंट्रीज़ में था वो ये था कि जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वो या हमारे साथ जुड़ जाएं, आई मीन यूएसएसआर के साथ जुड़ जाएं इस ब्लॉक के साथ जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक है, या एक यूएसए ब्लॉक के साथ या वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जो कि कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी है। तो ये दूसरी कंट्रीज़ को मजबूर करते थे कि आप एक तरफ होइए, नहीं तो आप हमारे दुश्मन हैं। इंडिया ने ये ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ब्लॉक को नहीं ज्वाइन किया, ना दूसरी ब्लॉक को, बल्कि एक अपनी ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो उस वक्त ये जो दो नेशंस थे अपनी एक स्ट्रेटजी से इनको इन्फ्लुएंस करने का एक उन्होंने तरीका किया था कि एक कंट्री को फेवर करते, दूसरी कंट्री को जो नेबर कंट्रीज होती थी तो उनको डिफरेंट वे से इकोनॉमिकली और बाय सप्लाइंग द आर्म इक्विपमेंट्स वो इन्फ्लुएंस किया। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये इम्पैक्ट जो है वो रिड्यूस होता गया और 90s के अंदर जब यूएसएसआर ब्रेकअप हुआ तो एक रशिया बन गया और दूसरा जो ब्लॉक है इट कंटिन्यूड। दैट मीन्स एक ही पावर जो है रिमेन पावरफुल इन द वर्ल्ड। अब ऐसी सिचुएशन में जो कंसेप्ट है वार का, वो या वार की को कंटिन्यू रखने का या इसकी स्ट्रेटजीज को अप्लाई करने का एक तरीका और डेवलप हुआ। वो क्या है? वो ये है कि यूएसएसआर कमज़ोर हो गया और साथ साथ चाइना जो है एक डिफरेंट पावर के साथ आगे बढ़ा। और आज की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना है ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हो चुकी है, जिसके साथ साथ ये कहने में एतराज़ नहीं होगा कि आज के दिन में यूएसए भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ओज टू दैट कंट्री। अब हमारी जैसी कंट्री जो इंडिया है इसमें दो चार फिलॉसफीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव करने के लिए, इनके अंदर एंटर करने के लिए विदाउट
या मैं ये कहूँ कि वार को बढ़ाने के लिए या दूसरी कंट्री को पुश बैक करने के लिए एक सस्ते ढंग से, दैट मीन जो चीपर वेज हैं, जो वार के अंदर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरे स्ट्रेटजिक वेज अप्लाई किए जाए। इंडिया में दो चार ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिनके मैं नाम लेता हूँ। एक स्ट्रेटजी है वो जिसे हम कहेंगे जिहाद, जिहाद फिलॉसफी। दूसरी है माओस फिलॉसफी, और तीसरी है चर्च फिलॉसफी, और चौथी है जो मैं मानता हूँ या मैं समझता हूँ वो ये है डायनेस्टिक फिलॉसफी। ये फिलॉसफी जो है अपने दुश्मन को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसके इंटरनल में, इनसाइड डोमेस्टिक एरिया के अंदर एंटर करती है, ताकि ताकि जो उनकी जो यूनिटी है, जो मैंने पहला मुद्दा पहले ही वीडियो में स्टार्ट किया था कि इज देयर इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये जो यूनिटी है इसको ब्रेकअप कैसे किया जाए, या उन फोर्सेस को इस तरह से डेवलप किया जाए कि जो आपकी कंट्री के अंदर पावर में आए वो उनकी फेवरेबल हों। मिसाल के तौर पर भारत भी ये ऐसा करता है, ऐसा नहीं है। हम चाहेंगे कि नेपाल में वो प्राइम मिनिस्टर बने जो हमारी बात को सुने। इसी तरह जो पाकिस्तान है वो भी यही चाहता है कि हुकूमत इस कंट्री में वो हो जो उनकी बात की, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर फेवर करती हो। इसी तरह चाइना भी यही चाहता है। तो इसी तरह से दूसरी कंट्रीज भी चाहती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो फिलॉसफीज़ है, ये जिसे हम कहते हैं कि जिहाद फिलॉसफी, jihad philosophy is connected with Pakistan. Mao's philosophy is connected with China. Then church philosophy is connected with Italy. And dynastic philosophy, you all know what I mean is, that's inside. This is a convenient philosophy. Combination of that, the ultimate impact achieving philosophy is that you should have a powerful government in India which is continuing with the dynastic philosophy. अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ढंग से कि इनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अब ये फिलॉसफीज़ जो हैं एक कंबाइन करें, आप एक पीरियड को देखें कि 1947 से लेकर इन सब फिलॉसफी को अगर हम ध्यान से सोचें तो अब 1947 से लेकर 1990 तक एक फिलॉसफी चल रही थी जो प्रेशराइज, जो हम कहते हैं यूएसएसआर की। उसके बाद हम देखेंगे कि माओज़ की, जब चाइना की पिछले 15 साल में उसकी आगे इनकरेजमेंट या डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती गई या प्रोग्रेस बढ़ती गई, तो उसका इन्फ्लुएंस भी इस कंट्री में बढ़ता गया और ऐसी फोर्सेस क्रिएट करने की कोशिश की गई। जिहाद फोर्स तो ऑलरेडी पहले ही पाकिस्तान से थी, राइट फ्रॉम 1947, मगर इन फोर्सेस ने अपने आप को कंबाइन करके आप देखेंगे उस पीरियड के अंदर 90s के बाद बहुत सी चीज़ें हुई हैं भारत में। आप देखेंगे मॉस फिलॉसफी से कितने ही जिहाद और झगड़े और एजिटेशंस आपके छत्तीसगढ़ में, नेपाल के नज़दीक एरिया रहने वाले में, बहुत से असम के अंदर या हम बंगाल के अंदर भी देखते हैं। इसी तरह जिहाद की जो बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, कितने ही चीज़ें हुई हैं। हमारे बॉम्बे में हुई है, 26/11 हुआ है, या बॉम्बे ब्लास्ट हुए हैं, या अलीगढ़ में हुए हैं, या दूसरी जगह पर हुए हैं। ये सब चीज़ें कंबाइन हुई हैं। साथ साथ आप ये भी देखें जो चर्च है उसकी एक्टिविटीज़ भी बहुत बड़ी और उसके वजह से भी बहुत से एजिटेशन हुए।
बहुत से मर्डर्स भी हुए, बहुत से किलिंग्स भी हुए। बहरहाल मैं इस मुद्दे को इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेटजिकल अप्रोच है, किसी कंट्री को यूनाइटेड ना रखा जाए। मगर आप देखेंगे राइट आफ्टर 209 और 10 के बाद जो एक और फिलॉसफी बढ़ी, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल फिलॉसफी, या हम कहें कि नेशनलिस्टिक फिलॉसफी, या हम कहेंगे इंडियनाइजेशन फिलॉसफी, जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी, ये एक इनकरेज सी महसूस हुई। जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है उसने इसके अंदर काफ़ी रोल प्ले किया, और मीडिया ने भी इसके अंदर काफ़ी रोल प्ले किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो फिलॉसफी है, जो हम कहते हैं इंडियनाइजेशन और नेशनलिस्ट फिलॉसफी है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई। और उससे इम्पैक्ट आया वो ये हुआ कि 2014 में जो लोगों ने इस फिलॉसफी को इनकरेज किया उनकी गवर्नमेंट बनी। मीन्स कि जो 120 करोड़ लोग जो एक बार 5 साल में वोट देते हैं, उन्होंने वोटें इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट करते हुए दिए। मगर इसके साथ साथ दूसरी फिलॉसफी भी थी, जो या हम कहें कि वो जहाँ पर ऐसी कंट्रीज़ ने जहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो भी इसमें बढ़ती रहीं और इतना सक्सेस नहीं हुआ, वो एक मुकाबले में रहीं। तो आप देखेंगे 2014 में दो फिलॉसफीज़ के अंदर एक जॉइंट फिलॉसफी और एक सिंगल फिलॉसफी ऑन द अदर हैंड, इस फाइट में बहुत लेस मार्जिन के साथ एक सक्सेसफुल फिलॉसफी आगे बढ़ी। वो ये है नेशनलिज्म, या दूसरा लफ्ज़ कहेंगे सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। हालांकि ये एक 2014 से लेकर 2019 तक, आप इस दौरान में आप देखेंगे कि ये जो चार फिलॉसफीज दूसरी हैं एजिटेटेड अगेंस्ट दिस फिलॉसफी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई। ये ऐसा चांस था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये फिलॉसफी अगली इलेक्शन के अंदर भी सक्सेसफुल होगी। तो दे गेव ए वेरी गुड fight. More investments are done and a lot of things were done. And you will see a lot of intellectuals, whether they are in the universities or whether they are the film side or they are some other areas, they became very, very active, very active. And as a result, you will find a lot of agitation talking about the जैसे हम कहते हैं कि भारत तेरे 1000 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत से इस्लामिक एजिटेशंस भी हुए, और बहुत से मॉल्स की एरियाज़ में मर्डर्स हुए, एजिटेशन हुई, और ये लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। और एक ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, और इस इन्फ्लुएंस से ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसका चाइना को फेवर होगा, या जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और उनकी पॉलिसीज़ को भी फेवर होगी। मगर साथ साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये काफ़ी एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है बिटवीन दी वोटर्स, दोज हु आर गिविंग वोट्स एंड दोज हु आर गिविंग वोट्स। इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, इसमें मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया, और उसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि जो इस फिलॉसफी के अंदर उनको इंसिस्ट किया, इस फिलॉसफी को, कि हम नेशनलिज्म और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को हाईएस्ट इम्पोर्टेंस देते हैं और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। रिज़ल्ट क्या था? रिज़ल्ट ये हुआ कि जो मासेस है, जो 120 करोड़ वाले वोटर्स हैं, उनमें नंबर ये इंक्रीज़ हो गया। नंबर इंक्रीज़ हुआ तो एक गवर्नमेंट दूसरी बनी। जब ये दूसरी गवर्नमेंट बनी तो दिस गवर्नमेंट बिकेम मोर इनकरेज्ड दैन दैट ऑफ द प्रीवियस पीरियड।
उनको यकीन हो गया कि ये जो हमारा पाथ है ये बल्कि बहुत ही सक्सेसफुल पाथ है, और ये पाथ कोई आज का नहीं है, ये एक हिडन पाथ है जो कि इंडियंस के अंदर, उनके डीएनए के अंदर है। वो हर्ड है। 1000 साल की गुलामी के बाद वो ये नहीं चाहते कि हमारी कंट्री पीछे जाए, इसलिए उन्होंने इस रास्ते को ज़्यादा एक्सेप्ट किया। जब गवर्नमेंट पावर में आती है और उसको ये महसूस होता है कि ये फिलॉसफी जो हमने स्टार्ट करी है, इससे कंट्री को या कंट्री मैन की रिक्वायरमेंट है और ये उनकी पल्स है, या ये हमारे सारी कंट्री की ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है वो एक रिक्वायरमेंट है, या जो वूंड जो है जो हज़ारों साल का उनके दिलो दिमाग के ऊपर बैठा हुआ है, उनको उनको रीएक्टिवेट होते हैं या उनको हमें मिटाना है। उस जख्म को हमने और आगे उसको क्योर करना है, तो वो फोर्सेस आगे इनकरेज होगी और इस चीज़ को, नेशनलिज्म को, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को, ताकि ये दोबारा गुलाम ना हो, ये ज़्यादा जोर पकड़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये गवर्नमेंट ऐसा करती रही और इन 2 पॉइंट्स के ऊपर जोर देती रही, और ये जोर अपना देने के लिए इस दौरान में इन्होंने बहुत से ड्रास्टिक एक्शन लिए हैं। जो ड्रास्टिक एक्शन 1940 से लेकर 1919 तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि ऐसे काम करें जो कि दूसरी फोर्सेस को या बॉर्डर कंट्रीज को उसकी या इंटरनल फोर्सेस को नाराज़ कर दें, ताकि गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक ना जाए। हालांकि उनका गवर्नमेंट का सोचना ये एंटी नेशनल नहीं करता है, ये बल्कि साबित ये करता है कि वो कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते थे, मगर डरते थे, खौफ खाते थे। मगर ये डर और खौफ जो है ये एंटी नेशनल है, जो मैं मानता हूँ कि आप सोच तो ठीक रहे हैं मगर जो आप कर रहे हैं वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो एंटी नेशनलिस्ट है। मिसाल के तौर पर आज अगर हम देखते हैं कि आफ्टर 370 या आर्टिकल 35 को एब्रोगेशन करने के बाद क्या हुआ ये कि भारत में क्या होना है वो एक दूसरी बात है, मगर पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस हुई। वो तो ये है कि बेसिक जिस पर पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता है, फाउंडेशन है, वो डिस्टेबलाइज हो गई, वो एक शॉकिंग स्टेज में पहुंच गए। और एक बात है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने हिम्मत नहीं आ रही, उसने बहुत कोशिश की, उसने सब जगह पर जाकर अपना ढंढोरा पीटा और ये बताने की कोशिश की कि ये जो आज की गवर्नमेंट है जिसको मोदी हेड कर रहा है, जैसे माओ चाइना में है ऐसे मोदी भी एक आगे आइकॉन बन रहा है, और ये मोदी ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि हमारे जो हक है, जो राइट है, वो उसको वैनिश हो गए हैं। हुआ ये जनरल असेंबली में ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की, मैं वहाँ काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर दिए, मगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके पास एक दोस्त था जो एक चाइना है, चाइना को उन्होंने रिक्वेस्ट की और चाइना ने उनकी हेल्प करने के लिए 3 बार सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा रखने के लिए अप्लाई किया। आप देखिए कमाल की चीज, वो मुद्दा एजेंडा में इंक्लूड ही नहीं किया गया कि ये एजेंडा हम ले भी सकते हैं डिस्कशन के लिए या नहीं। तो रिजल्ट क्या है,
रिजल्ट ये है कि चाइना वॉज एंग्री, पाकिस्तान वॉज ऑल्सो एंग्री. So what they will do? What is the next alternative? All cheap strategies. Not only I'm talking from the morally, but money-wise also. Cheap strategy were applied for a long time, for 15 years or more than that. But they remained successful for a certain time. Beyond that, it was not successful. Result was the government of that philosophy has dropped and the new government has come. So, what is the next alternative? The next alternative was applying a force, and the force was applied in the border now and in the Galvan Valley, now from Doklam to Galvan, and now they are not going back. It's not because they know it. They have three times more defense forces and 4 times more economical power. But in spite of that, they are not coming ahead. They are sitting over their two strategic points. Now, India has declared that we are not going to accept the philosophy of appeasement, neither inside the country nor outside the country. This kind of determination has been conveyed to the rest of the world, and world is watching. World has seen it. Result is what? The diplomatic policy of the country as on date is extremely successful. Extremely successful. The most of the powerful countries are on the side of India, whereas many countries who are much more weaker, where the China is showing his interest and making investment in those countries and is also spending money in the form of charity. But the China knows it, that it is not only that you have the economic power and military power which makes you successful, but there are other reasons also which are diplomatic, which are the rest of the countries, powerful countries are doing. No, these are because of the present circumstances. The world has become very small. It's not that big. Had that been big of Second World War times, then the situation would have been entirely different. Probably the China would have entered the country. Now that situation is not possible. Here depends one thing more which I want to say is that you have whatever economic power or military power, although these both are very, very important, you cannot be successful unless and until you have the unity in your country. Unity is very, very important. That's why I say, is there unity in diversity in India? Shashi Tharoor pointed this while discussing with Sadhguru on the TV, on which I took up this point and started giving my lectures on the YouTube, because I found it and I felt very much satisfied with my conviction that diversity cannot be achieved by just talking or by giving lectures. It has to be done into action. Action is very important to my mind. 3. Number 1, in a democracy, this dynastic
rules are not allowed. Not allowed means not enough. Is a poisonous. Is like a cobra poison which kill the basic spirit of the democracy. Democracy, I don't mean exactly in the parliamentary system, but also in the corporate field also. Even in USA, you will find it, the owners are not the chief executives. Whereas in India, still it is continuing, except one or two examples. For example, in Mani Group, the authority, the top, is dynastic. Whereas in Tata, it is not the major shareholder who is at the top, but there is a professionals. Similarly, this democratic spirit is required in the total environment, in the country, which is very important, and dynastic rulership or in the parliamentary system is definitely very, very harmful because it affects the rest of the country also, their systems. Now, the second thing is that security, nationalism. Nationalism is very, very important. Security is very, very important. If you have to compare the Indian nationalism with the Chinese nationalism, I would very clearly say it, the spirit of the nationalism in China is many steps higher than that of right now. Now, of course, this spirit has started and is growing. That means 120 crores awareness is growing. And it needs to be increased. Only then you can become a strong country. Now, why it is like this? Let us see. Now, why no this present government, what it has started, and the China is becoming angry and they have come forward because they have started building bridges, roads, helipads, airports close to the borders of China. China doesn't like it. But China has itself done it. They have developed infrastructure throughout 3,500 kilometers, right from starting Doklam to Ladakh. They have done it. But when India started, they are not accepting it. But they were quite happy with the other government for a long period. They never developed this infrastructure. So they were liking it. No, if any government comes and starts the opposite against their wishes, they won't like it. And they will do everything. They will do everything. Even today, I would say it, they will not stop. They are not daring to do it now, but they will creep on in their minds to find various other ways and means how to make the country weak, how to make their unity into a disunity, how to make the inside forces more separate, more adverse, so that the other forces become weaker. I would say, according to me, that time is over. I don't think the China would be able to achieve what it is thinking. On the contrary, China would be losing. Why it will be losing? After this coronavirus, there is awareness. Of course, I know that the corporate sector only thinks about the profit and the business cannot be shifted so easily. But any new business which will be coming, or the existing, or the development or increase of the business, the
the corporate sectors would be thinking to do something else where they have more trust, and that country is India. India is a country where it can be trusted. Unfortunately, there are few mistakes in the country, in their establishment, in their regulations, which I think they are trying to do and will be improving it. With this, I am ending my video, and I would rather request you to please share this to your friends and relatives. My idea is that we must make the sense of nationalism and the security and against dynastic rule, not only in the parliament system, but in the corporate sector also, and other fields also. With that, my motto, I request you once more, and I thank you very much for listening to me. Thank you very much. God bless you all. Happy, healthy life.